It's one of those sagas where everyone in our newsroom, people in every home, in every office, they all have an opinion. They're all convinced they know. No one knows for sure, but they still think they do. Joining me on this broadcast, I want to welcome some of our reporters and some officials who've been in different agencies. I want to start by welcoming our crime editor, Shams Tahir Khan, joining me on the news track. Gaurav Sawant, our strategic affairs expert, looking at the international dimension of what's at play. Munish Pandey tracks the Ministry of Home Affairs. We've got Arvind Ojha, who's our crime editor, and we've got Samarth Srivastav. He is in Kathmandu, going back to the places that Seema Haider and Sachin went to in Kathmandu and in Pokhara. I want to start by asking Gaurav, who in our newsroom, we are part of a fascinating conversation this afternoon about why, on the basis of what you've picked up so far, you seem to be convinced that Seema Haider is a sinister Pakistani spy. So there are many aspects that don't add up, Rahul. If this is a love story, it's a very strange love story. Why? For example, why would she have two passports? When she came But to we don't India, know for sure that she has two passports. So I'll read out what has come from the Uttar Pradesh police. This is a background note. In all, she's come with 6 passports. 4 children. 1 is hers. 1 is an additional passport. And India Today has been able to get the passport numbers. So 1, why would she have 2 passports? And if I could, the number is HZ0004421. Very strange, Rahul. The second passport number is HZ0004422. So 2122, 2 consequent numbers, and she has 2 passports in her name. One says Seema Haider, the other just says Seema. One has been used, the other is unused. So why would any individual have 2 passports? Point 1. Point 2, in Pakistan there is a rule. The NADRA, which is National Database and Registration Authority, issues a CNIC, which is a computerized national identity card. It's like our Aadhaar. This computerized national identity card in Pakistan is issued to every individual when that individual turns 18. If she's either 21 or she's 27. Again, a discrepancy in her date of birth according to her passport and according to what she says herself. She says, I'm 27. If she's 27, why was her NADRA card or her CNIC card not issued 10 years ago when she was 18? Why was it issued just last year? So was everything pieced together? Her passport is last year, her database national identity card is last year. Was an identity created last year for her to come into India, to become friends with this guy and then move into Uttar Pradesh? Shams, when viewers will listen to Gaurav's response, they'll think, boss, yahan dal mein kuch kala hai. On the back of all that you've studied of this story, all the officials you've spoken to in different agencies, you seem to be convinced that she's just a woman in love and everybody is just playing Seema auntie and being judgmental when they shouldn't. अभी तक जितनी सारी चीज़ें आई उसको देखते हुए ऐसा लगता है, जैसे राहुल मैं शुरुआत से अगर बताऊं, सिर्फ 72 आवर्स के अंदर सीमा को बेल आउट कर दिया जाता है और नोएडा पुलिस उसको अपोज नहीं करती कोर्ट में। नोएडा पुलिस का ये कहना था कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें ये थी कि सीमा अपने बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आई बिना वीज़ा के। ये उसने एक जुर्म किया है, क्राइम किया है। लेकिन जहाँ तक स्पाई की बात आती है, हम लोगों ने जितनी भी जासूसी फिल्में देखी हों या नॉवेल पढ़े हों या इवन मैंने कई ऐसे जासूसों से बात की, बल्कि इवन आईबी के कुछ लोगों से ही बात की, सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी देश में स्पाई या जासूस के तौर पर जा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप उसको छुपाएंगे। This is her real name? मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर और उस आप कंट्री को भी आप छुपाएंगे। सीमा पूरा एक बैग लेकर आती है, ये रहे मेरे पासपोर्ट, ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट, ये मेरा कराची का पता, ये मेरे हस्बैंड का आई कार्ड, ये मेरे फादर इन, वो जेन्युइन डिटेल दे रही है। अगर वो स्पाई है तो पहली चीज़ वो कि वो इंडिया और पाकिस्तान के हमारे जो रिलेशन है हम सब जानते हैं, वो किसी और कंट्री का भी बता सकती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट बगैर वीज़ा के और इंडिया आ रही है और उसे पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट देखेंगे तो पहला उस पर डाउट जाएगा। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ यहाँ आना, किसी स्पाई इतनी बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करते, पहली चीज़। सेकेंड ये है कि जो सीमा का पाकिस्तानी है, क्यों डाउट हो रहा है? एक तो पाकिस्तानी है, ऊपर से पाकिस्तानी लड़की है, ऊपर से दिखने में ठीक ठाक है। जो हाल के वक्त में हमने देखा अभी, जैसे DRDO साइंटिस्ट की जो चार्जशीट दाखिल हुई, सेम यही सारी चीज़ें थी। एक ब्रिटिश लड़की थी जिसने अपने जाल में फंसाया।
तो ये सारी चीज़ें डाउट क्रिएट करती हैं और ये डाउट गलत नहीं है। तो पाकिस्तान से आया, उस पर आपको शक करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नोएडा पुलिस ने किया फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर। ये नोएडा पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि स्पाई एक दूसरे देश से आता है तो फिर इसमें आपको सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री, IB, ये सारी इन्वॉल्व हुई। और जो हमारे सोर्सेज, उनका कहना है कि 48 आवर्स के इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सीमा को इतनी जल्दी बेल आउट किया गया, वरना आज अब तक मैंने नहीं देखा है कि किसी को आप स्पाई के डाउट में पकड़ें और फिर आप उसको फौरन बेल आउट कर दें। तो ऐसा इस केस में नहीं हुआ। She wouldn't have got bail if serious investigative agencies like the Intelligence Bureau thought that she was a spy. She would have been locked up for a long time. And secondly, which spy comes with her own children? She doesn't need to come and tell us that she's Pakistani and bring her own children to India. She would have come like a Matahari all by herself. So, we're still waiting to see if a DNA test is carried out and whether these are her children. That's point one. I'm not saying she's a spy. I'm just saying there are many aspects to the story that just don't add up. She didn't come to India showing her Pakistani passport at the border crossing point when she crossed over to Siddharth Nagar from Nepal. In fact, that's the biggest question that an enemy country. We have an open border with Yes, Nepal. but then your documents are checked. Only Indians can come without documentation. But the whole border is porous. You can walk in from anywhere. Correct, but in this case, you're supposed to show your Aadhaar card, or you're supposed to show your passport, or you're supposed to show your PAN card or your driving license. That is how you cross over from Nepal into India. She apparently came in a bus. She did not show her Pakistani passport there. Had she shown her Pakistani passport, she would have been held immediately. But then somehow, who held her Chums' crossover? point that if she's actually Pakistani, she won't come with a Pakistani passport. When terrorists come, they don't bring their Pak credentials with them. That's like the surest way of getting busted. But how did she get busted? She didn't come saying, I am Pakistani, hi, I'm giving a television interview. She quietly came for 15 days, quietly lived in Greater Noida, and that's a very sensitive area. You have your Hindon Air Base, you have a Jewar International Airport that's coming up. She wanted to just settle in. It's only when the boy's family insisted you get married, they approached a lawyer, went to Bulandshahr. It's the lawyer who later alerted the police. So this raises very serious questions about the credibility of the Uttar Pradesh police and our intelligence agencies, that a Pakistani woman was living in our country for 15 days. They hadn't the foggiest idea this was happening. So and that is why now there's an ATS investigation, an anti-terror squad investigation, and for the police to say कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा वो जासूस है, that's exactly why you have intelligence agencies. That is exactly why you have counter-terror forces. And we've been misled. A David Coleman Headley came into our country carrying an American passport and went around, looking at every VA, VP, vital asset and vital point in Delhi and Mumbai. So we've been bitten once. We haven't woken up. अरविंद ओझा, आपकी बात हुई सीमा के पास्ट हस्बैंड से, क्या निकल के आया? क्या ये बात सही है कि वाकई में उसके ब्रदर्स आर्मी के अंदर हैं? पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में सीमा का, क्या इसने ये घर बेचा, वाकई में 12 लाख का घर बेचा, या किसी एजेंसी ने इसको 12 लाख रुपए दिए? नहीं राहुल, देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और अब से कुछ देर बाद बाकायदा कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने एक अब तक की जो जांच हुई उसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी तक सीमा ने जो कुछ भी बयान दिया है वो काफी हद तक सही सामने आया है। जो उसने बात कही थी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, वो भी बात काफी हद तक सही है। अभी तक की जो ATS की इन्वेस्टिगेशन है और जो नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सीमा वाकई कोई जासूस है, कोई स्पाई है। अभी तक यही माना जा रहा है कि वो प्रेम प्रसंग के चक्कर में सचिन से मिलने के लिए आई थी। वहीं अगर इंडिया टुडे ने जो बात की है, जो सीमा का फर्स्ट हस्बैंड है गुलाम हैदर, जो फिलहाल सऊदी अरब में, उसने ये कहा कि सीमा ने बताया था कि उसका जो भाई है आसिफ वो कराची में है, पाकिस्तानी रेंजर्स है, वहीं उसके जो अंकल है वो इस्लामाबाद में है। और कहीं ना कहीं एजेंसीज ने इस बात की पुष्टि भी की है। लेकिन ये काफी अनयूजुअल चीजें हैं, जिस तरह से सीमा यहां पर आती है, जिस तरह से पासपोर्ट पे, शायद यही वजह है कि एजेंसीज लगातार सीमा को इंटरोगेट कर रही है। हालांकि अभी तक कोई स्पाई का एविडेंस नहीं मिला है। वही गौरव की बात मैं को रिफर करूंगा, अगर कोई एजेंसीज ये कहती है लैब्स पर कि किसी के चेहरे पर पाकिस्तानी नहीं लिखा है, तो ये बहुत अजीब सा बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। क्योंकि लोकल नेपाल से लेकर
अगर सीमा ग्रेटर नोएडा तक आ जाती है और किसी एजेंसीज को जानकारी नहीं मिलती है तो यह बड़ा फेलियर। लेकिन जो एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन है, साथ ही साथ इंडिया टुडे की टीम ने काठमांडू, नोएडा से लेकर उसके हस्बैंड तक से बात की है, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो सीमा पर शक भी पैदा करती हैं। वहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को का दावा है कि अभी तक स्पाई है सीमा, इसको लेकर कोई एविडेंस नहीं मिला। राहुल। Munish Pandey, you've been speaking to the Ministry of Home Affairs. What are your sources telling you? I'm seeing this press note that Arvind was referring to put out. It's very rarely that any police force gives such detailed ball by ball commentary. This is not a chart sheet that they've put out. This is not a court document. They've given a day by day, ball by ball commentary of what Seema has done. It just also shows the level of interest in the story, which is why the police is doing something of this nature. But Arvind is absolutely right that they haven't found evidence yet to declare her a spy, but there are things which don't add up. The point that Gaurav was making, that she has 4 mobile phones, 5 Pakistani official passports, 1 adhura naam pate ke bagair without use passport, which essentially means there's 1 passport which is like a half-baked kind of passport. So why would she have this, Munish? Is it adding up for you? Well, Rahul, as far as the agencies and the officials of Ministry of Home Affairs are concerned, they are keeping a close eye on the investigation. But now this is a very curious case, and it is very unusual for any ATS agency or for the UP ATS to come out with an official press release in which what they have mentioned so far is that overall the suspicion on Seema Haider is because of the 6 passports, 4 mobile phones, but also they have mentioned the entire detail. 2019, her husband went to Saudi. 2020, they started playing PUBG, and in 2023 March, they first time met in Nepal. In May, 10th of May, she left Pakistan, went to Dubai, and then on 11th she arrived in Nepal, and then on 12th she left for India and reached Noida on 13th. They have given a very detailed description of the overall journey of Seema Haider. Also, they have mentioned that it looks like that as of now, this looks like a case of love affair between Seema and Sachin. But at the very same time, they have also mentioned that they are continuing the investigation, because what Gaurav said, these are very valid points. She has 6 passports. No common person will have 6 passports. Why was she? No, but those aren't her passports. No, 1 second. Those aren't 6 of her passports. There's 1 official passport of hers. There are 4 passports of her children, and since everyone here is playing Sherlock Holmes, Gaurav, I have a question for you. You're saying there's a 2nd passport. Now imagine if the ISI was actually involved. Surely they would have got a proper passport for her. This press release says, एक अधूरे नाम पते के बगैर प्रयोग किया हुआ passport. If this is an official agency that's helping her, they can get her a proper passports, है ना शम्स भाई? Proper passport तो मिल ही सकता है, आधा अधूरा कच्चा passport क्यों मिलेगा? आधा अधूरा is the naam. One passport no, but has it's not her being full name. used. Yeah, it's unused. So she has an unused passport with only Seema. One says Seema Haider Zedi, the other says only Seema. So that's the adha adhura naam. That's the unused passport. Shams, how difficult is it? Like in India, it's quite difficult to get another passport. In Pakistan, is it easy? Is it tough? नकली पासपोर्ट मिलता है कि नहीं पाकिस्तान में? हर जगह मिलता है, क्योंकि हम सब कभी एक ही हुआ करते थे, तो और अंग्रेजों के दिए इंडिया में मुश्किल हो, इंडिया में काफी मुश्किल ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वहीं राहुल बात आऊँगा कि 5 और 6 और 7 पासपोर्ट की गिनती पे मैं नहीं जा रहा हूँ। सिंपल सी एक चीज़ है, अगर स्पाई वाला पूरा थ्योरी अगर करें तो इतनी बेसिक सी चीज़ है कि वो अगर अपनी ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर आ रही है तो फिर एक डुप्लीकेट पासपोर्ट का मतलब नहीं है, सेम आइडेंटिटी और सेम नाम का, तो उसको भी लाने का जरूरत नहीं है। उसको ये सारे एविडेंस को काठमांडू में ही छोड़ देना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था। अगर स्पाई की सोच के साथ आ रही है, अगर वो सारे एविडेंस आ रही है, तो जो अभी तक आधे अधूरे पासपोर्ट की भी बात है, शायद उसे लगा कि इससे कोई मतलब ही नहीं है। No, but that's a very good point Shams make. If she's a spy and she's sent by an agency and she's trained, the theories I'm hearing is that she dances so well because she's been trained. That's how she knows how to wear a sari in the Indian way. If she's such a genius and such a devious spy, why would she carry a Pak passport to India? She also is supposed to have left behind certain documents which were carried from Pakistan, not carried beyond Kathmandu. She's alleged to have, again this is source based information, she's alleged to have sent friend requests to army jawans.
and to others living in Delhi and NCR region. If she is so much in love with Sachin, why is she sending friend requests to No, but others? there again, there is no official confirmation yet So, about I this am theory. just going back, This could be well langar gossip. So, fair enough. It's all a matter of investigation. Then her mobile phone has been scrubbed clean. So she's carrying 4 mobile phones. ये सही है कि phone clean है? Those mobile phones Sure, do not have Record पर data. नहीं है. Those mobile phones do not have No, data. but this is very suspicious. So, Arvind Oja, there is data has her from phone been before her scrubbed arrival clean? to Because India. if you're just a normal person, it's not that easy to scrub your phone in a way that the agencies can't find out. They've sent it for forensic examination, is what I've been told. But Arvind can tell us फॉरेंसिक को better. भेजा है, बिल्कुल ये सही है. क्या उसने फोन क्लीन कर दिया था अरविंद? देखिए मैं सबसे पहले बताऊं कि जो आधे अधूरे पासपोर्ट की बात हो रही है वो इसमें यह है कि एक पासपोर्ट जिसमें सीमा नाम लिखा हुआ था और दूसरा पासपोर्ट जिसमें सीमा हैदर लिखा हुआ था. तो बहुत मुमकिन है और इस तरह से कई बार होता है कि कोई पासपोर्ट पे अपना नाम पूरा नहीं लिख पाता है तो वो दूसरा पासपोर्ट बनवाता है जिसमें पूरा नाम लिखता है. तो सीमा बहुत मुमकिन है कि पहले का उसका जो पासपोर्ट हो वो शादी के पहले का हो, उसके बाद शादी के बाद उसने सीमा हैदर लिख लिया हो. ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है जिस पर एजेंसीज जांच कर रही है. रही बात दूसरी, कई डेटा डिलीट हुए हैं. अमूमन हम में आप में से कई ऐसे लोग हैं जब कोई चैट्स करते हैं तो वो डेटा डिलीट करते हैं, लेकिन चूंकि ये मामला एक पाकिस्तानी महिला की घुसपैठ का है इसलिए एजेंसीज ने इस डेटा डिलीट को भी बहुत सीरियसली लिया है. लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पहले नोएडा पुलिस ने और शम्स ने भी इस बात का जिक्र किया है कि नोएडा पुलिस से पहले जब भी कोई फॉरेनर से रिलेटेड मामला होता है तो उसके पहले सेंट्रल एजेंसीज वो आती हैं, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो, नोएडा में मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट है, मिलिट्री इंटेलिजेंस रॉ के ऑफिसर, उन सभी ने सीमा से इंटरोगेट किया सीमा को. उसके बाद लोकल पुलिस को दिया गया, लोकल पुलिस ने फॉरेनर एक्ट में उसे अरेस्ट किया, उसके बाद वो जेल गई, उसके बाद बेल मिला और बेल भी नोएडा पुलिस ने उसको अपोज नहीं किया. उसके बाद एटीएस को इन्वेस्टिगेशन दी गई. 2 दिन एटीएस के जो एसएसपी हैं वो लखनऊ से यहां पर आते हैं, 2 दिन उसको इंटरोगेट करते हैं. उसके बाद अभी जो प्रेस रिलीज आई है कम से कम उसमें यही दावा किया जा रहा है कि जो कुछ भी सीमा ने कहा, जैसे गुलाम हैदर यूएई में जो उसका हस्बैंड है 70 से 80 हजार रुपए उसको पर मंथ भेजता था, उसने पैसा जमा किया, प्रॉपर्टी ली, फिर उसके बाद सचिन से मिलने के लिए वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद किस तरीके से वो इंडिया आई, वो यहाँ पर मिली, उसके बाद वो बुलंदशहर जाती है, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट वो एक लॉयर को देती है और वो लॉयर तब जाकर पुलिस को कांटेक्ट करता है, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है. तो कई ऐसी चीजें हैं जो अनयूजुअल है जिसको लेकर ही इंटरोगेशन. यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो वो ये है कि कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया था कि एटीएस को जांच सौंपी गई है नोएडा पुलिस के बाद, इसलिए मामला कुछ सीरियस है, स्पाई है. नोएडा पुलिस ने खुद लखनऊ हेडक्वार्टर को एक एप्लीकेशन लिखा और ये कहा कि चूंकि इसमें कई कंट्री इन्वॉल्व है, नोएडा की हमारी एक सीमा है, हम काठमांडू में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हम शारजा से अगर वो आई वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो बेटर हो कि ऐसी एजेंसी जो बाकी फ़ोन के डिटेल्स और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर सके, दूसरे देश में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो उसको ही जांच देनी चाहिए. तो नोएडा पुलिस के कहने पर ही इस मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई थी और कोई दूसरा रीजन. Okay, Seema Haider is under investigation. The Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad trying to find out about her Pakistani links. It's being suggested that her brother and uncle are with the Pakistani army. Sources say Seema seems to have sent friend requests to officials in the Indian security forces. Now, why would she try and do that is one of the questions that investigators are trying to ask. मेरा नाम सीमा सचिन है. सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो. But Seema Haider's real-life tale blurs the lines between love and suspicion. The Pakistani citizen's illicit crossing of borders has triggered a full-scale investigation by Indian authorities. Agencies suspect that there may be more to her story than meets the eye. A deeper inspection of her activities, both offline and online, underway. Official sources tell India Today that UP's anti-terror squad has closely investigated Seema Haider's social media accounts. Turns out most of the people associated with them live in the national capital region. According to their sources, Seema Haider also sent friend requests to some soldiers of the Indian Army.
Police now are looking for the motive. On her part, Haider claimed someone may have created a fake profile in her name. नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी सच्चाई सामने आएगी तो फिर ही आप बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के साथ हूँ, मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। Central agencies suspect Seema Haider's infiltration into India could have been facilitated by a third party. A Pakistani Muslim, she could have been trained in Hindu customs, attire, and the Hindi language as spoken in the hinterlands of Uttar Pradesh. जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। A trademark practice adopted by Pakistan's rogue spy agencies to send its female operatives into India via Nepal. Central agencies haven't yet been able to confirm Seema Haider's claims that she entered India on May 13th. No evidence yet found about the presence of a third country citizen that day along the key border points between India and Nepal. Her brother Asif being a Pakistani ranger, and uncle serving in the Pakistani army have also raised eyebrows. No evidence yet of her claims either that she sold a house to fund her India trip. अभी भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गाँव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। जीपीएस का कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई, तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है। Love and suspicion intertwined. A case still shrouded in mystery. With Jitendra Bahadur Singh and Arvind Ojha, Bureau Report, India Today. I want to go across now to Samar Srivastav. He is in Kathmandu. He's tracking whether the information given by Seema and Sachin adds up in Nepal. What have you found out in your preliminary investigation so far, Samar? Well, Rahul, it is very clear that there is something wrong when it comes to the hotel booking or visiting the temple Pashupati that is in Kathmandu, because when India TV reached the hotel and checked the entry in that particular register, there was no mention of either Sachin or Seema Haider. The receptionist told India TV that yes, both the duo came and stayed for around 7 days, but they were too normal. Most of the time they remained inside the room. Hardly they came out to visit temples like Pashupatinath and various others, but most of the time they were inside. But it is also worth mentioning here that they tried to hide their identity. They did not tell the receptionist that one particular person is Sachin, while the other one is Haider. While when India TV moved to the Pashupati temple, there is one area where there's the wedding happens at that particular area. And when we spoke to the pundits out there and also the others out there about that register where the entry takes place for the marriage, there was no entry of Seema or Sachin. That is a bigger question, like when did they enter wedlock? While the receptionist claimed that it could be said in the real video that Sachin is applying sindoor at the forehead of Seema, and he claimed that they entered wedlock in the particular room. So these were some questions coming in, why they had to try to hide their identity. And the biggest question is how they crossed the Nepal border. What SSB forces were doing in Gorakhpur, Siddharthnagar or various districts which are in a way adjoining districts around Indo-Nepal border. So this is a bigger question, and that's why UP police has sought report from SSB as well to give information how Seema and Sachin, because for the first time in March, Sachin crossed the border from Gorakhpur. Number 2, in May, Seema Haider via bus from Pokhara entered the border via Siddharthnagar area. That is also the border of Indo-Nepal, and that is a bigger question, and that's why India TV is tracking each and every detail from where Seema Haider went to. Even currently I'm also traveling towards Pokhara, and that's the route where Seema Haider went through a cab and later took a bus.